Hi, good morning, beta. Welcome to day 14 of our preparation for DEPR, IES, IAS Economics, and UGC NET Economics exam. Beta, every Monday to Friday, we go ahead and we meet at 10:30 a.m. and together we solve past year questions from these papers, right? I want to start by telling you that consistency is the key. रोज मेरे साथ अगर बैठ के ये करोगे क्वेश्चंस, सिर्फ तब आपको एक आदत बनेगी कि हमें रोज प्रैक्टिस करनी ही करनी है। स्पेशली जब हम आईएएस और आईईएस या डीपीआर की भी बात करते हैं, तो ये तीनों ही पेपर्स क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर हैं, इनमें लिखना पड़ता है, तो बहुत एसेंशियल है कि आप मेरे साथ ये सेशंस लो और इन सेशंस के थ्रू आप समझो कि आंसर लिखते कैसे हैं। एक कॉन्सेप्ट को जानना काफी नहीं है, इट्स नॉट इनफ टू जस्ट नो अ कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को लिखना आना भी जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूं कि अच्छा बेटा, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो हर बच्चा एक अलग तरीके से उस आंसर को लिखेगा। शायद एक बच्चा पूरे पैराग्राफ में ही उसको समझा पाए और एक बच्चे को पूरा पेज लग जाए उसे समझाने के लिए। बट व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट आंसर टू सच क्वेश्चंस, ये जानने के लिए ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो wherever subjective answering is required, wherever you need to write answers, right, wherever you need to present answers in a good way, it is very important that you practice questions with me. अगर वो नहीं करोगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को जान लोगे, यू विल से कि नहीं मैम मेरे को आई नो द कॉन्सेप्ट वेल, मैं अपने आप से लिखूंगी, दैट डज नॉट हैपन। हाँ, सो दीज आर सब्जेक्टिव पेपर, यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल योर स्पीड, किस स्पीड से आप आंसर्स लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू राइट, योर प्रेजेंटेशन, व्हाट पॉइंट्स यू हाईलाइट, ये सब कुछ, व्हाट कीवर्ड्स यू यूज, ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वाई व्हेन आई डू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद यू, तो मेरे साथ साथ आप भी उनको प्रैक्टिस करो कि ठीक है, इस आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं। और वहां पे आप अपना सजेशन भी डालो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम कैन आई ऐड दिस पॉइंट ऑल्सो या कैन आई ऐड दैट पॉइंट ऑल्सो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू माई सजेशन। तो वो सजेशंस लेने के लिए ये सेशंस अटेंड करके इनको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर विद इट बेटा? ओके बेटा, अब एक और चीज है, बिफोर आई गो अहेड आई टेल यू एवरी डे। अच्छा, आई वॉज गोइंग थ्रू माई एनालिटिक्स। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू पुट समथिंग ऑन यूट्यूब to analyze those things, and I realized that 60% of the students who watch the videos have not subscribed to the channel. So go ahead and just subscribe to it, because I am going to put my 100% in the next few days with these entrance preparations. So I really want all of you to be there with me as I prepare you for these exams. Okay beta, also join the LinkedIn channel of ArthaPoint and the Telegram group of ArthaPoint also. Let's start with the session beta. Hi, good afternoon everyone. Beta, welcome to the next session where we go ahead and discuss a question from the past year papers of IAS Economics Optional. This question was also one of the past year question, and let us try to see what this question is saying. It says, discuss the Lerner's Index of Monopoly Power. Just this simple question. It actually came for 5 marks, and we have to go ahead and we have to try to solve this question. 5 marks. Okay. Let us start with it. What is Lerner's Index telling us? In very simple language, Lerner's Index tells us the market power of the monopolist. है ना बेटा? वो क्या बताता है कि एक monopolist प्राइस के ऊपर अपने मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर कितना प्राइस चार्ज कर सकता है. How much can a monopolist charge over and above his cost? That is what Lerner's Index tells us. And Lerner's Index tells us
that this market power of the monopolist, it will depend on the elasticity of demand. That is what we want to show. So we want to go ahead and start our answer exactly by saying that Lerner's index is a measure of the monopoly's market power. How much price can I charge? How will I determine my power? मुझे कैसा पता चलेगा मेरी कितनी power है? By understanding what price I can go ahead and charge. So Lerner's index is a measure of monopoly's market power, which is equal to the markup over the marginal cost. कितना मैं cost से ऊपर charge कर सकती हूँ? How much can I go ahead and charge above marginal cost? That is the Lerner's index. Consider the profit maximization condition. MR is equal to MC. बेटा ये मैं एक बार आप लोगों के लिए derive कर देती हूँ. So remember that what is total revenue? Total revenue is price into quantity. Beta, what is marginal revenue? How total revenue changes as quantity changes. So this means that how P into Q changes as Q changes. Can we differentiate this? Yes. We have two things, P and Q. So I can use product rule. So beta, differentiation of first function with respect to Q into second as it is, plus differentiation of the second function into first as it is. तो ये क्या हो जाएगा? This will give me dP by dQ into Q. dQ by dQ हो गया 1 into P. Now what I will do now, I will take P common. So what will I get? dP by dQ into Q by P plus 1. P को मैंने बाहर निकाल दिया. I've taken P common from here. So I have been able to go ahead and I have been able to see that when I take P common, what do I get? I get dP by dQ into Q by P plus 1. Achha, tell me something. What is the formula of elasticity of demand? It is how quantity changes as price changes into original price by original quantity. यहाँ पर इसका opposite आ रहा है ना, dP by dQ into Q by P आ रहा है. Elasticity of demand होता है dQ by dP into P by Q. So I can just write this as P into 1 by elasticity. Elasticity का inverse है यहाँ पर plus 1. This can be the formula for marginal revenue. So I just want to show this that the marginal revenue can be written, if I just talk about marginal revenue, it can be written as price 1 plus 1 by elasticity. This is what I have just shown you in this case. Now, so I hope this derivation is absolutely clear to everyone. What we have done, we have gone ahead and we have tried to find total revenue, that is price into quantity. Marginal revenue, वो कैसे मिलता है? Differentiate total revenue with respect to the quantity. ठीक है? Then use the product rule. Finally, I got this formula and this is nothing but P 1 by elasticity plus 1. Okay, beta. Now let's go a little ahead. So at profit maximization, what happens? Marginal revenue is equal to marginal cost. Marginal revenue हम निकाल चुके हैं. Marginal revenue is this. And I have to equate this to marginal cost. So marginal cost से equate कर दिया. So यहाँ से what will happen is, if I take P on the other side, I will get 1 by elasticity plus 1 is equal to MC by P. ठीक है बेटा? अब अगर मैं सिर्फ 1 by elasticity को एक साइड पे रखूं, then can I go ahead and say that 1 by elasticity will be MC by P minus 1? Right? Can I go ahead and say that 1 by elasticity will be MC minus P by P? Can I take minus sign common? Yes. So this will be P minus MC by P. ये माइनस साइन को दूसरी साइड ले जाओ. सो माइनस 1 बाय इलास्टिसिटी विल बी P माइनस MC बाय P. बेटा व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव. ये हमें पता है. डिमांड इलास्टिसिटी इज नेगेटिव बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये नेगेटिव रहा होगा, इसके साथ एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये पूरी चीज मेरी पॉजिटिव हो गई. दिस वुड हैव बीन पॉजिटिव.
So what is this telling me? This is telling me that the gap between price and marginal cost, that is some positive number. I have been able to charge a price over and above the marginal cost. The gap between the two is positive. That is called markup. जितना मैं प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज कर पाऊं, उसी को तो हम मार्कअप बोलते हैं. और वो मार्कअप क्या रहा है यहाँ पे? बेटा मार्कअप इज कमिंग इनवर्सली रिलेटेड टू इलास्टिसिटी. नाउ थिंक अबाउट परफेक्ट कंपटीशन. व्हाट हैपेंस इन परफेक्ट कंपटीशन? मैम परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग का जो डिमांड कर्व बनता है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक. दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हो जाती है ना बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाती है इनफाइनाइट. 1 बाय इंफिनिटी होता है 0. एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज 0. सो इफ आई टेल यू that the elasticity of demand is infinity in case of perfect competition, 1 by infinity becomes 0. So beta this side, this will become 0. So I will have what? I will have this equal to 0. So if P minus MC is 0, तो बेटा P equal to MC हो गया ना. So this will give me P equal to MC. This means that in perfect competition there is no market power. You can only charge a price exactly equal to marginal cost, but market power नहीं होती है. You cannot charge a price above marginal cost. But here, in case of monopoly, elasticity is not infinite. Demand curve is not horizontal. Right? So in monopoly you face a downward sloping demand curve. Elasticity infinity नहीं होती है, कोई number होता है. So because it is some number, you are able to charge price over and above the marginal cost. I hope this is clear to you. So what are we saying? We are saying that, what are we saying? We are saying that we are able to go ahead and charge a price over the marginal cost. जितना प्राइस हम मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करते हैं उसी को हम मार्केट पावर बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड मार्केट पावर. दैट मार्केट पावर इज इनवर्सली रिलेटेड टू इलास्टिसिटी. द मोर द इलास्टिसिटी द लेस द मार्केट पावर. तो यही मैंने एंड में यहाँ बेटा वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग. अ हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस इंक्रीज इन प्राइस will cause customers to switch to substitute goods, so your market power will be lower. थोड़ा सा एक last example से समझते हैं. Take the case of medicines. Medicines have low demand elasticity. If I have to take a medicine, even when its price will increase, I will take it. I will not look for its substitute. I cannot switch. तो उस केस में the producer of the medicine can increase the price as much as he wants. उसका जितना मन होगा वो जितना प्राइस इंक्रीज करेगा, मैं तो भी जाके वो मेडिसिन खरीदूंगी. So he has huge market power because elasticity of demand is low. Now consider I go into a market where there are multiple vendors. सब लोग potatoes ही बेच रहे हैं. Everyone is selling potatoes. If one of those increase the price of potatoes, I can buy from the other one because they are substitutes of each other. The elasticity of demand is high. I can easily substitute. I can easily switch. So if one of them will increase the price, I will quickly reduce the demand and move to the other person. So when the demand elasticity is high, when I can switch, when I can change my demand, what will happen? There is no market power. The producer cannot charge a very high price. So with monopolist का मतलब ही ये है कि उसकी monopoly है, वो एक लौटा है जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है. He is the sole seller of the product. You cannot find substitute. Can you find substitute for a metro? No. So when you have a monopoly of something, you will automatically find that there is low demand elasticity, that people cannot find substitutes.
and in that case you will have high market power. So always try to write conclusions in your answer beta. The Lerner's index suggests that markup depends inversely on the price elasticity. So you saw how we gave a complete derivation of this Lerner's index. We explained what that means. We explained it for perfect competition, for monopoly, and finally we gave a conclusion to this answer. This is the way you should be writing answer in your exam. Okay? Okay beta, we will meet again with another question. Till then, goodbye.